Now here is the question. If sec theta equal to 13 upon 5, then 2 sin theta minus 3 cos theta upon 4 sin theta minus 9 cos theta, find the value. तो हमें वैल्यू ज्ञात करनी है. हमें पता क्या है, sec थीटा इक्वल टू 13/5. तो सबसे पहले जो चीज़ हमें पता है, आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट वी मेक अ ट्रायंगल, ओके, A B C. I can give name anything. Next, suppose that this angle is theta, okay. Sec theta equal to 13/5. Sec theta equal to 13/5. Sec equal to hypotenuse upon base. Sec theta equal to hypotenuse upon base. So hypotenuse is 13 and base is 5. So we need to get perpendicular. perpendicular का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर. perpendicular इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस 13 का स्क्वायर माइनस बेस यानी 5 का स्क्वायर. perpendicular इक्वल टू अंडर रूट 169, 13 स्क्वायर ऑफ 13 एंड स्क्वायर ऑफ 5 minus 25. We get perpendicular equal to under root 144 or under root 12 into 12 or 12. So we get the perpendicular is 12, 12, 5, 13. Okay, we need the value of 2 sin theta minus 3 cos theta upon 4 sin theta minus 9 cos theta. So we need sin theta and cos theta. Find the value of sin theta. Sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse 12/13. cos theta equal to base upon hypotenuse यानी 5/13. So put the value of sin theta and cos theta here. 2 into sin theta यानी 12/13 minus 3 into cos theta यानी 5/13 upon 4 into sin theta यानी 12/13 minus 9 into cos theta 5/13. Okay, 12 to the 24/13 minus 15/13 upon 48. 12 4 that 48 upon 13 minus 9 5 the 45 upon 13. So we can write this as 24 minus 15 upon 13, 48 minus 45 upon 13. So this can multiply as this 9/13 into 13/3. 48 minus 45 equal to 3. 3 1 ja 3, 3 3 ja 9, 13 1 ja 13. So the value of 2 sin theta minus 3 cos theta upon 4 sin theta minus 9 cos theta equal to 3. Answer. Retry. If sec theta equal to 13/5, then find the value of 2 sin theta minus 3 cos theta upon 4 sin theta minus 9 cos theta. We make a triangle. I have
sec theta, any hypotenuse upon base, we find perpendicular by using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, उसी को हमने ट्रांसफर करके एक नया फॉर्म निकाला, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बी बेस स्क्वायर. So we get the value of perpendicular is 12 and sin theta is perpendicular upon hypotenuse, base upon hypotenuse. So we get the value of, we put the value of sin theta and cos theta here and solve it and find the value 3.